Negotiating Joy and Dignity. Usama Khilji. Published November 25, 2022. Dawn Editorial. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. As if self-censorship in the media and the blocking of websites were not enough, Pakistanis had to yet again rally for their right to view a harmless film in cinemas after it was celebrated and decorated globally at the most prestigious venues a filmmaker can dream of. Joyland, a film by Pakistani director Usama Khilji, got standing ovations at Cannes, where it won the jury prize, as well as at the Toronto International Film Festival. The large team that worked hard for 6 years to bring together Joyland was overjoyed when the film was selected as Pakistan's official submission to the prestigious Oscars. It has been tipped by international publications as a frontrunner for the Best International Film Award. All was joyous in the land of arbitrariness as these wins were celebrated, and the censor boards in Islamabad, Punjab and Sindh cleared it for screening starting November 18. Joyland, named after the iconic amusement park in Lahore, was deemed too controversial by a largely irrelevant political party that unsuccessfully appeals to the people's religious sentiments, as obvious from its single seat in the Senate and National Assembly. Their criticism? The film is promoting homosexuality when the film does not mention or allude to it. In reality, this is deliberate obfuscation of the plight of Pakistan's Khawaja Sira community. One of the leads in the film is Alina Khan, a brilliant transgender actress from Lahore, who plays the role of Biba in the film. A character all too real, she realistically portrays the struggles a Khawaja Sira faces in Pakistan where, prior to partition, the British Raj managed to relegate the community that was once the keeper of secrets in Mughal courts to the margins of society. The dignity of subjects in films that are under attack, the dignity of filmmakers, and the dignity of the viewers of the films must be respected. It is ironic that in the film, Biba faces all the criticism from other characters that detractors wanting to ban the film in Pakistan have hurled at it. Siam's crime seems to have been to humanize the Khawaja Sira community and to dare to cast an actual Khawaja Sira character in the film, rather than a man or woman playing the role of one. The other crime seems to have been not portraying the character of Biba as the butt of jokes, but as a breathing, functioning, complex human being trying to survive in an oppressive society. But the focus on this discussion is a distraction from the main thesis of the film, a mirror to the moral ambivalence in our society related to gender roles and familial patriarchal pressure, and the violation of dignity out of the lug kia kahe gain, what will people say, fear. The film's poignancy lies in powerful moments of silence, where so much is said without a word. So under what law did the Information and Broadcasting Ministry all of a sudden issue a notification banning the release of the film a week in advance? Why was the Central Censor Board certificate overruled arbitrarily based on complaints from people who had not seen the film? Why did it take consistent public outcry for the Prime Minister to take notice and constitute a cabinet committee? Why did this committee refer the film back to the Central Censor Board for a full board review when the board had already certified the film? How could the Federal Information and Broadcasting Ministry overrule the certification of the provincial censor boards? These are critical questions that the ministry, the provincial and central censor boards, and indeed the Prime Minister's office, must set a concrete policy for. The release of a film should not play out like a T20 cricket match. Each step that a film has to go through should be concretized in policy, without room for arbitrary censorship because of undue pressure. Is the state so weak that criticism of a film will lead to such banal wastage of taxpayers' resources just to placate the holders of misinformed ideals? The dignity of subjects in films that are under attack, the dignity of filmmakers, and the dignity of the viewers of the films must be respected and upheld in accordance with the values the Constitution clearly spells out. It is admirable on the part of the government to stand behind the Transgender Protection Act, 2018, which has also come under fire this year, and to which the agitation against Joyland was connected, as stated privately by some opposing the film.
At least 4 transgender people have been killed since the vile campaign against the law protecting them was started, and there must be consequences for this hate speech. At the heart of this is an attempt to completely dehumanize transgender people, a hurtful process that is also responsible for severe mental health issues among them, often leading to suicide in the face of helplessness. This makes such campaigning criminal, as it puts the life of an already vulnerable community in further danger. The campaign is deliberately attempting to confuse the term transgender with homosexuality to repel people and encourage transphobia through homophobia. However, there was a glimmer of hope on Sunday when Pakistan's first Sindh Murat March was held in Karachi with participation from Khawaja Sira community from across Sindh. They refused to be let down and celebrated their rich indigenous history in South Asia, in solidarity with the Zan, Zindagi, Azadi's slogan of Iranian protesters. The organizers mobilizing the transgender community from different strata of society. It is time that the state paid heed to the demands of the transgender community who are demanding criminalization of hate speech against transgender people, keeping the blood money law out of the murder cases of trans persons, safeguarding the right to self-perceived gender identity, criminalization of discrimination in housing and property, criminalization of disowning transgender children by parents and guardians, implementing the existing 0.2% quota for trans persons in employment and education, protection of the Transgender Protection Act, and that Sindh pass a bill for the protection of trans people, including the history of Khawaja Siras in the curriculum, sensitization campaigns for respecting Khawaja Siras, action by PEMRA against hate speech against Khawaja Siras on TV, safe state, backed housing for Khawaja Siras, and reserved seats in the parliaments for Khawaja Siras. The writer is director of BOLOB, an advocacy forum for digital rights. Published in Dawn, November 25, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. गोया मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करना काफी नहीं था। पाकिस्तानियों को एक बार फिर सिनेमा घरों में एक बेज़रर फिल्म देखने के हक के लिए रैली निकालनी पड़ी जब इसे आलमी सतह पर इंतहाई मोतबर मकामात पर मनाया और सजाया गया जिसका एक फिल्म साज ख्वाब देख सकता है। पाकिस्तानी हिदायतकार साइम सादिक की फिल्म जूएलैंड को कांस में खड़े होकर दाद दी गई, जहां उसने ज्यूरी इनाम जीता। इसके साथ साथ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी। जॉयलैंड को इकट्ठा करने के लिए 6 साल तक सख्त मेहनत करने वाली इस बड़ी टीम को इस वक्त बहुत खुशी हुई जब इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किया गया। इसे बैन अल-अक़वामी इशाअतों ने बेहतरीन बैन अल-अक़वामी फिल्म अवार्ड के लिए सबसे आगे रनर के तौर पर तब किया है। मनमानी की सरजमीन पर सब कुछ खुशी की बात थी क्योंकि इन कामयाबियों का जश्न मनाया गया था और इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में सेंसर बोर्ड्स ने इसे 18 नवंबर से स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी दे दी थी। लाहौर के मशहूर तफरीही पार्क के नाम से मंसूब जूएलैंड को एक बड़ी हद तक गैर मुतालिका सियासी जमात ने बहुत मुतनाज़ा समझा था जो लोगों के मजहबी जज्बात को मुतासिर करने में नाकाम रही है, जैसा कि सेनेट और कौमी असम्बली में इसकी वाहिद नशिस्त से वाज़ेह है। उनकी तनकीद। फिल्म हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रही है जबकि फिल्म में इसका जिक्र इशारा नहीं किया गया है। हकीकत यह है कि ये पाकिस्तान की ख्वाजा सरा बरादरी की हालत ज़ार को जानबूझकर नज़रअंदाज करना है। फिल्म में मरकज़ी किरदारों में से एक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक शानदार ट्रांसजेंडर अदाकारा अलीना खान है जो फिल्म में बीबा का किरदार अदा कर रही है। एक बहुत ही हकीकी किरदार। वो हकीकत पसंदाना तौर पर उन जिदोजहद की अक्कासी करती है जिनका सामना ख्वाजा सरा को पाकिस्तान में करना पड़ता है, जहां तकसीम से पहले बरतानवी राज ने इस बरादरी को जो कभी मुगल दरबारों में राजों का मुहाफिज था, मुआशरे के हाशिए पर मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की थी। जिन फिल्मों पर हमले होते हैं उनमें मज़ामीन के वक़ार, फिल्मसाजों के वक़ार और फिल्मों के नाज़रीन के वक़ार का एहतराम किया जाना चाहिए। सितम ज़रीफ़ी यह है कि फिल्म में बीबा को दूसरे किरदारों की जानिब से तमाम तर तनक़ीद का सामना करना पड़ता है जो पाकिस्तान में फिल्म पर पाबंदी लगाने के ख्वाहिशमंद नाक़दीन ने इस पर फेंक दी है।
ऐसा लगता है कि साइम का जुर्म एक ख्वाजा सरा बरादरी को इंसानी शक्ल देना और फिल्म में एक मर्द या औरत का किरदार अदा करने के बजाय एक हकीकी ख्वाजा सरा किरदार को कास्ट करने की जुर्रत करना था। ऐसा लगता है कि दूसरा जुर्म बीबा के किरदार को लतीफ़ों के बट के तौर पर पेश नहीं कर रहा है, बल्कि एक सांस लेने वाले काम करने वाले पेचीदा इंसान के तौर पर पेश कर रहा है, जो एक जाबिराना मुआशरे में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बहस पर तवज्जो फिल्म के मरकजी मकाला से तवज्जो मरकूज है। हमारे मुआशरे में सिनफी किरदारों और ख़ानदानी पिदरसरी दबाव से मुताल्लिक इखलाकी इबहाम का आईना और लोग क्या कहेंगे खौफ से बाहर वकार की खिलाफ वर्जी। फिल्म की खूबसूरती खामोशी के ताकतवर लम्हात में है, जहां एक लफ्ज़ के बगैर बहुत कुछ कहा जाता है। तो फिर किस कानून के तहत वजारत इत्तलात व नशरियात ने अचानक एक हफ्ता पहले ही फिल्म की रिलीज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया? सेंट्रल सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को इन लोगों की शिकायतों की बुनियाद पर मनमाने तरीके से रद्द क्यों किया गया जिन्होंने फिल्म नहीं देखी थी? वजीर आजम को नोटिस लेने और काबीना कमेटी तश्कील देने के लिए मुसलसल अवामी एहतजाज क्यों करना पड़ा? इस कमेटी ने फिल्म को मुकम्मल बोर्ड के जायजे के लिए सेंट्रल सेंसर बोर्ड को वापस क्यों भेजा, जबकि बोर्ड ने पहले ही फिल्म की तस्दीक कर दी थी? वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात सूबाई सेंसर बोर्ड्स की सर्टिफिकेशन को कैसे मुस्तरद कर सकती है? ये वो अहम सवालात हैं जिनके लिए वजारत, सूबाई और मरकजी सेंसर बोर्ड्स और दरहकीकत वजीर आजम के दफ्तर को एक ठोस पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। किसी फिल्म की रिलीज टी20 क्रिकेट मैच की तरह नहीं चलनी चाहिए। हर वो कदम जिससे किसी फिल्म को गुजरना पड़ता है, पॉलिसी में कंक्रीट किया जाना चाहिए, गैर जरूरी दबाव की वजह से मनमाने सेंसरशिप के लिए जगह के बगैर। क्या रियासत इतनी कमजोर है कि किसी फिल्म की तनकीद टैक्स दहिंदगान के वसाइल के इस तरह के बेदरेग़िया का बाइस बनेगी ताकि गलत मालूमात के हामिलीन को मुतमईन किया जा सके? जिन फिल्मों पर हमला किया जाता है, इनमें मज़ामीन के वकार, फिल्मसाजों के वकार और फिल्मों के नाजरीन के वकार का एहतराम किया जाना चाहिए और इन अक़दार के मुताबिक बरकरार रखा जाना चाहिए जो आइन वाज़े तौर पर बयान करता है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के साथ खड़ा होना हुकूमत की तरफ से काबिल सिताइश है, जो इस साल भी तनकीद की जद में आया है और जिससे जॉयलैंड के खिलाफ तहरीक जड़ी हुई थी, जैसा कि फिल्म की मुखालफत करने वाले कुछ लोगों ने निजी तौर पर कहा था। कम अज कम 4 ट्रांसजेंडर अफराद को उनके तहफ़्फ़ुज़ के कानून के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू होने के बाद से कत्ल किया जा चुका है और इस नफरत अंगेज तकरीर के नताइज होने चाहिए। इसके मरकज में ट्रांसजेंडर लोगों को मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी बनाने की कोशिश है, एक तकलीफ दे अमल जो उनके दरमियान शदीद ज़हनी सेहत के मसाइल के लिए भी जिम्मेदार है, अक्सर बेबसी का सामना करते हुए खुदकुशी का बाइस बनता है। ये इस तरह की मुहिम को मुजरिमाना बना देता है क्योंकि ये पहले से ही कमज़ोर कम्युनिटी की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डालता है। ये मुहिम जानबूझकर ट्रांसजेंडर की इस्तिलाह को हम जिन्स परस्ती के साथ उलझाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को पसपा किया जा सके और हम जिन्स परस्ती के जरिए ट्रांसफोबिया की हौसला अफजाई की जा सके। ताहम इतवार के रोज़ उम्मीद की एक किरण इस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान का पहला सिंध मूरत मार्च कराची में मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंध भर से ख्वाजा सरा बरादरी ने शिरकत की। उन्होंने मायूस होने से इनकार कर दिया और ईरानी मुजाहिरीन के जिंदगी आज़ादी के नारे के साथ यकजहती में जनूबी एशिया में अपनी भरपूर देसी तारीख का जश्न मनाया। मुंतज़मीन मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रांसजेंडर बरादरी को मुतहर्रिक कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि रियासत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उन मुतालिबात पर ध्यान दे जो मुतालबा कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर को जुर्म करार देना, ट्रांस पर्सन्स के कत्ल के मुकदमात से खून के पैसे के कानून को बाहर रखना, खुद साख्ता सिनफी शनाख्त के हक की हिफाजत, रहाइश और अमलाक में इम्तियाजी सलूक को जुर्म करार देना, वालिदैन और सरपरस्तों की तरफ से ट्रांसजेंडर बच्चों को मुस्तरद करने का जुर्म, रोजगार और तालीम में ट्रांस पर्सन्स के लिए मौजूदा 0.2% कोटा को नाफिज करना, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ और ये कि सिंध ट्रांस पीपल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल मंजूर करे। निसाब में ख्वाजा सरों की तारीख को शामिल किया गया है। ख्वाजा सरों के एहतराम के लिए हसासियत की मुहिम्मात। पैमरा की जानिब से ख्वाजा सराओं के खिलाफ टीवी पर नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कार्रवाई ख्वाजा सरों के लिए महफूज रियासत की हिमायत याफ्ता रहाइश
اور پارلیمنٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے مخصوص نشستیں مختص کی۔ مضمون نگار ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک فورم بولو بھی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اخذ شدہ بتاریخ 25 نومبر 2022۔ Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. For more upcoming new videos, like, subscribe, share and comments.